Welcome to another vlog, that is Manali vlog, and this is day 2. Welcome guys. So with hearty breakfast and a lot of excitement, we decided to go to this village, that is Sethan village. But before that, let's go to some adventure park. So now we left for Solang Valley, where there are a lot of adventure camps. So there are a lot of booking books in the way, so you can book adventure camp from any of these. But I personally will recommend you guys that you book from the closer you get, you should book from there only, because it is easier to get to know what are the prices and the competitive prices while covering all these booths. This is counter number 26. This is the valley where have all been went off. आज हम खाएंगे पहाड़ों की मैगी. It was time for the big ride, the giant swing. It was amazing to see such beautiful valleys from that high up from the ground level. It was just amazing. You should try this.
although the fall, the free fall, the feeling of free fall was nice. Just look at this. सो ये देखो, ये पूरी चढ़ाई हमने चढ़ी है। वहाँ हम ये दिखाई नहीं दे रही होगी, ये इस जगह से आप यहाँ से चढ़ते हुए मैं हूँ, ये अंजनी महादेव का ट्रैक कह सकते हो आप इसे। ये मेरा दोस्त सौरभ, ये मेरी फ्रेंड उदिता, मेरी वाइफ अर्पिता। अभी हमें और चढ़ना है ऊपर एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी मैन। आई थिंक इट्स वर्थ इट। आप एटीवी में आओ, उससे अच्छा है कि आप पैदल आओ, ट्रैकिंग करो, ठीक है। आप महादेव के पास जा रहे हो, ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स एफर्ट एंड उनको खुश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। छोटी मोटी चढ़ाई में भी आप वो खुश हो जाते हैं, पर आप घोड़ों को परेशान करो उससे तो बेहतर ही है। और ये मेरा दोस्त है, इसने अभी पत्थर उठा के ऐसे फेंका। ये सारी हरकतें नहीं करनी यहाँ पे आके, सेफ़ रहें, क्योंकि कोई बड़ा पत्थर अगर उसकी वजह से ढलान पे नीचे जाती है तो लोगों को चोट लग सकती है। तो ये आप देखो, ये व्यू आई डोंट नो, मैं भी GoPro में शूट नहीं कर रहा हूँ, वो चार्ज हो रहा है बिकॉज एक ही बैटरी है, दूसरी बैटरी ख़राब हो गई। तो ये देख सकते हो, ये माउंटेन्स है, ये यही तो यहाँ की खूबसूरत है। वहाँ एक देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है, काफ़ी ऊंची ऊंची हाइट से पैराग्लाइडिंग कराते हैं अलग अलग तरह की, आप सब कर सकते हो। ये हमारे सामने स्नो जमा है, धूप काफ़ी तेज़ है, कड़क है, बट अभी भी हमारे बिल्कुल सामने स्नो जमी है। ये यहाँ पे एक पतला सा रास्ता आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, वेट। ओके, लुक एट दैट। ओके, दैट इज़ आई डोंट नो, आई थिंक दैट्स वाटरफॉल। जो स्नो मेल्ट होती है ऊपर से, तो वो ऐसे धीरे धीरे यहाँ से होती हुई आती है। तो इट्स लाइक दैट। बी सेफ एंड यू ऑल्सो गाइज हैव अ गुड जर्नी। बाय। So now we left for our next destination, that is R.O.A.R tunnel and Sissu village. We were told that the Rohtang pass route is closed now, so that is why we chose R.O.A.R tunnel and Sissu village. Some people suggested us that we will still see a lot of snow there, so let's see what we see there, and let me show you guys. Finally, we are here. The R.O.A.R tunnel gate is just awesome. Just look at the view. This is the view of the R.O.A.R tunnel. These are our bikes, our group.
The Himalayan in the Himalayas. Look at the view, man. मैं तो सोच रहा इसके ऊपर कैप रहता तो यार राइडिंग जैकेट के साथ ही आया। कैसा लग रहा है सौरभ? भाई जन्नत। What about you, Arpita? Finally I did it. Feeling cold? Yeah. What about the view? The view is beautiful. Okay. And how about you? Say something. It's amazing. Okay.
You